Namaskar, good evening viewers. You are watching Sansad TV and this is House Highlights with me, Rajiv Kumar Singh. We get you the details of the proceedings of both Lok Sabha and Rajya Sabha on the 5th day of the monsoon session. Before we bring you the details, look at the headlines. Lok Sabha passes Indian Antarctic Bill 2022. Bill extends application of domestic laws to Indian research stations in the Antarctic region. Chairman rejects notice under Rule 267 to suspend rules to take up discussion on price rise, reiterates that government has agreed to take up the issue. Upper House discusses private members' bill on right to health. Now, news on the proceedings of Lok Sabha in detail. The lower house was adjourned till 25th of July after the house was conducted amid sloganeering by the opposition over price rise and inflation. The House was adjourned twice in the first hour of the session's commencement. As soon as the House assembled at 11 a.m., opposition members, including Congress and left parties, came to the well and staged protests. Speaker Om Birla appealed to them to go back to their respective seats and take part in the proceedings of the House. माननीय सदस्यगण, आपको मैं सबको इजाजत दूंगा। आप प्रश्नकाल में व्यवधान नहीं करें, ये प्रश्नकाल आपका है, सदन आपका है। मेरा काम सदन को व्यवस्था से चलाने का है। अगर सब सामूहिकता से निर्णय करके सदन चलाना चाहते तो उचित रहेगा। मैं सदन चलाना चाहता हूं, देश की जनता चाहती है सदन चले, इसलिए चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप विराजे, आप सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi also appealed to the opposition members to take part in the proceedings, saying the government is ready to discuss the issue of price rise and it will be done once Union Finance Minister Nirmala Sitharaman recovers from her illness. बिल भी पारित नहीं करना चाहते हैं, चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं और इस सदन है चर्चा करने के लिए और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स they want question hours to be run, sir. They are depriving the rights of the members. I condemn this attitude. We are ready for discussion as soon as FM comes back after recovery. When you say they are trying to be littering the House and the MP stature, I condemn this attitude, sir. Amid protests by opposition members seeking a debate on price rise, Lok Sabha on Friday passed the Indian Antarctic Bill 2022, which seeks to extend the application of domestic laws to research stations set up by India in the Antarctic region. The bill also seeks to protect the Antarctic environment and regulate activities in the region. India has 2 active research stations in the Antarctic, Maitri and Bharti, where scientists are involved in research. Earth Sciences Minister Jitendra Singh moved it for consideration. Replying to the brief debate on the bill, Singh said the Antarctic Treaty was signed in 1959 and India became a signatory in 1983. 54 देशों में से 29 देश ऐसे हैं जिनको कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है, अर्थात जो निर्णायक जो विषय होते हैं, जो निर्णायक कार्रवाई होती है, उसमें भाग ले सकते हैं। और आपस में ये मान्यता है कि सभी के सभी देश अपने अपने संसदों में इस प्रकार का विधान लाएं ताकि वहाँ पर यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है जिससे कानून का उल्लंघन होता है या जिससे कोई और ऐसी गतिविधि जो उस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ट्रीटी का बुनियादी उद्देश्य था कि टू डीमिलिटराइज अंटार्कटिका, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की इस तरह की गतिविधि ना रहे जहाँ पर के ज़मीन को कब्जा करना हो या किसी तरह की सैनिक कार्रवाई हो। उस ट्रीटी के मद्देनज़र और उसकी मान्यता को स्वीकार करते हुए भारत के लिए भी एक बाधे बन जाता है कि हम इस प्रकार का विधान यहाँ लाएं
जो अंटार्कटिका में अगर कोई इस प्रकार की उल्लंघन होता है तो उसको किस तरह से निपटाया जाए, उसका क्या समाधान और क्या कार्रवाई की जाए। Participating in the debate, BJP MP Jayant Sinha spoke about the impact of global warming on the Antarctic, saying that 62% of the world's fresh water is in the Antarctic ice shield. BJD's Bhartari Mehtab said the bill aims to promoting Antarctica as a natural reserve. अगर आप और विश्व में जो देश हैं उन्होंने भी एंटार्क्टिक को सुरक्षित रखने के लिए विधेयक पारित किए हैं, लेकिन 2-3 इस बिल में ऐसे प्रोविजंस हैं जो और सब जो विधेयक हैं उनमें नहीं है। पहली बात तो ये है कि कोई भी अगर साइंटिफिक मिशन जाए एंटार्क्टिक में तो इसको वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है, और वेस्ट मैनेजमेंट में जिसमें कि वहाँ का वातावरण किसी तरीके से न बिगड़े, आपको वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है और आपको वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी बनाना है कि कैसे आप डिस्पोजल करिए अगर कोई भी वेस्ट है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसका एक हिस्सा है। दूसरा, हम लोग एक 14 मेंबर की हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के हर प्रतिनिधि की जगह है, साथ साथ एक्सपर्ट्स की जगह है। तो कोई भी अगर आपको परमिट चाहिए तो आपको ये प्लान इस कमेटी से परमिट लेकर ही आपका अप्रूवल मिलेगा, फिर जाके आप वहाँ वैज्ञानिक काम कर सकते हैं। Antarctica is home to several seal species, including leopard seals, one of the most aggressive of all marine predators. This 400 kg apex predator feeds mostly on penguin and fish. This is the natural habitat of Antarctica. And to protect this habitation, it is necessary that we also become a part to the United Nations agreement. This bill aims at promoting Antarctica as a natural reserve that is devoted to science and peace, and to ensure that the Antarctica does not become the scene of international discord. And that is the basic purpose for which this bill is being introduced. And I believe, cutting across party line, everybody should support this bill. जब हमारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इस पर रिसर्च करते हैं तो क्या इसका भी पता लगाते हैं कि जब इस इलाके से जब तेल और गैस निकाला जा रहा है तो उसका इफेक्ट अंटार्कटिका के इस क्षेत्र में कितना पड़ रहा है। सिर्फ हम ग्लोबल वार्मिंग के तरफ ध्यान दे रहे हैं, किंतु नीचे से अगर गैस और ऑयल निकाल लिया जाए तो वो सतह जो है अंततः उसका फिलिंग अगर प्रॉपर नहीं हो तो वो सतह बैठने लगती है। तो हमें भविष्य के लिए अगर चिंता करनी है तो ये भी चिंता करनी है कि अगर वहाँ सबसाइड होने लगेगा बर्फ। अंटार्कटिका बिल, इसका अहमियत हमारा मंत्री जी हमें समझा रहे थे। सर, इसको अहमियत को मद्देनजर पहले ही जिस समय ये अंटार्कटिका बिल का इंट्रोड्यूस हुआ था इस सदन में, उस समय हमारे पार्टी का मैं खुद खड़ा होकर ये बिल को और चूज दुरुस्त करने के लिए और इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम भी कुछ सलाह दिए थे उस समय। अभी भी भाग लेने में हम काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। एक बीएससी मीटिंग बुला के हम सबको बुला के एक बार अगर चर्चा कर ले, सब कुछ आराम से चल सकते। Lok Sabha took up matters of urgent public importance under Rule 377 on Friday. Members Rajveer Singh, Sushil Kumar Singh and Pallab Lochan Das mentioned matters related to their constituencies. रेल हमारे देश के यातायात के प्रमुख साधनों में से है जिसे हर कामकाजी व्यक्ति इस्तेमाल करता है। कासगंज उत्तर प्रदेश से कोई गाड़ी नहीं है। एक गाड़ी आगरा दिल्ली चलाने का मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग अति पिछड़ा और नक्सल प्रभावित है, साथ ही ये आकांक्षावान जिलों की सूची में भी है। परियोजना के लिए कई बार सर्वे हुआ और किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस भी जारी किया गया। अब परियोजना का प्राकृतिक राशि 326 करोड़ रुपए से बढ़कर 2800 करोड़ रुपए हो गई है। अधिकारियों की उदासीनता के कारण प्राक्कलन राशि में काफ़ी वृद्धि हो गई और इस पिछड़े क्षेत्र की जनता को विकास योजना से और रेल से संबद्धता से वंचित करने का कार्य किया गया। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से माननीय रेल मंत्री जी से ये आग्रह होगा
कि बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा कराने हेतु तत्काल कदम उठाया जाए। Currently, the bi-weekly Rajdhani Express via Bogibil and Delhi-Naharlagun Arunachal Express does not halt at Biswanath, due to which thousands of rail passengers have to travel up to 70 kilometers to Rangapara railway station or 100 kilometers to Harmoti railway station. Therefore, I request Honorable Railway Minister to consider our humble submission for stoppage of New Delhi-Dibrugarh bi-weekly Rajdhani Express via Bogibil. Amid the din, questions related to regional benches of a Supreme Court were taken up during question hour in Lok Sabha. राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे प्रांतों में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के मुकदमों को निस्तारण करने के लिए इन प्रांतों में न्यायपीठ की आवश्यकता है। क्या मंत्री जी ये आश्वासन देना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए स्वतंत्र न्यायपीठ की घोषणा करके उन महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? मैं उनका सोच और उनका जो सवाल है उसका मैं बिल्कुल सहमत रखता हूं, लेकिन वो जो मुख्य सवाल है आज के जो बाइफर्केशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनटू डिफरेंट बेंचेस सवाल है, तो उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। Sir, there were an overload of 4.7 crore pending cases. Out of them, 87.4% are pending in subordinate courts, 12.4 in high courts, while nearly 1,82,000 cases have been pending for over 30 years. But this spike is not reflected in number of judges available to hear these cases. In all the reports submitted by the Law Commission of India, they have recommended that there should be establishment of Supreme Court regional benches in different regions of the country, specifically east, west, north, south. But there are various views on that. I would not like to dwell at length about various views. अध्यक्ष जी, पूरे देश भर में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग बेल एप्लीकेशन के लिए जेल में बंद पड़े हुए। देश के प्रधानमंत्री ने 1 साल के पहले आवाज़ उठाई। हमारे लॉ मिनिस्टर इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके ही राज्य राजस्थान में जाकर भी उन्होंने अपने मन की भावना व्यक्त की। बहुत सारे लोग पैसे नहीं है इसलिए जेल में बंद पड़े हैं। बहुत लोगों का बेल हुआ है, इसके लिए वो जेल में बंद पड़े। बहुत लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, इसके लिए वो बंद पड़े हैं। गृह मंत्रालय के माध्यम से एक कमेटी बनाया गया है, एडवाइजरी कमेटी बनाया गया है, जिसके तहत जो कन्विक्ट्स हैं, जो कई सालों से जेलों में पड़े हुए हैं, जिसका हम चाहते तो निकल सकते थे लेकिन कई कारणों से नहीं निकल पाए, उसको स्पेशल रिलीज करने का एक फैसला हुआ और नालसा के माध्यम से हम लोगों ने लीगल असिस्टेंस देने का फैसला किया। We will take a short break here and be right back with more session updates. The I2U2 grouping is a reflection of India's growing engagement with the countries of West Asia, including Israel. India has peace and security in this area as a major requirement. The leaders also welcome India's interest in joining the US, the UAE and Israel in the Agriculture Innovation Mission. The idea is to try and increase the productivity. It's a big problem. Because of climate change, irrigation is very much needed because water is not stable anymore. Welcome back. This is House Highlights. Now moving on to Rajya Sabha. Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu on Friday urged the agitating members to enable the House to return to normal while voicing concern over the week-long disruption of the proceedings of the House. He reiterated that there will be a discussion on the issue of a price rise as the government also agreed to the same. Chairman rejected a notice under Rule 267 for suspension of rules to take up discussion on the price rise given by some members, saying that such notices were not admitted. Honourable members, I received notice under 267 for suspension of rules and take up a particular subject by Sri Viray Vishwam on price rise. Tiruchi Siva, same. Mallikarjuna Kharge ji, same. Edamaram Karim, same.
Dr. C. Sivadasan, same. This has been earlier disposed of by the House, saying that I am not allowing it, but we'll have discussion separately. That's what has been said. Sri Jayant Chaudhary has given a notice, need to review Agnipath scheme. Sri Pramod Tiwari, concerned over misuse of agencies. Deependra Singh Huda, same. K.C. Vedugopal also same. As there are opportunities to discuss them on through other notices, please, play cards, I will take a serious view. Please don't do it. Please don't do it. Please, Deependra, what are you doing? You have wasted 1 week time, precious time of the people and also Parliament. This is not the way. Particularly when the House is ready to discuss and the government also expresses willingness. Please stop this. Earlier in the day, Rajya Sabha proceedings were adjourned several times amid protests by the opposition on price rise and other issues. When the House met for the day, Chairman M. Venkaiah Naidu rejected the adjournment notices given by opposition members over the issue of price rise and GST hike. Amid noisy scenes, the House was adjourned till 12 noon. When the House assembled at 12 noon, Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh urged the protesting members to return to their respective seats. Leader of the House, Piyush Goyal, reiterated that the government is ready for discussion once the Finance Minister will recover from the COVID. जिस प्रकार से विपक्ष के हमारे साथी कर रहे हैं, सर मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, आज मेजॉरिटी ऑफ द हाउस चर्चा चाहती है, सरकार भी चर्चा चाहती है, गंभीर विषय है। अभी कोविड का जिक्र हुआ, हमारी माननीय वित्त मंत्री को कोविड हुआ है, कोविड के बाद आएंगी, यहाँ पे सार्थक चर्चा हो, वो सुनना चाहती है उनकी बातें, लेकिन जिस प्रकार से ऐसे में कैसे सार्थक चर्चा हो सकती है? Leader of opposition in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, said the opposition is demanding a discussion over the issue of price rise under Rule 267. Responding to it, Deputy Chairman Harivansh said the government and opposition should talk about holding a discussion. सर, बड़े नम्रता के साथ हम आपसे अपील करते हैं कि हम दूसरा कुछ आपसे मांग रहे हैं। रूल 267 के तहत ही माननीय एलओपी साहब, जिस पर चेयरमैन साहब ने सुबह में रूलिंग दे दी है, मैं नहीं दे सकता। आप जान सकते हैं चेयरमैन साहब ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अरे वो सेंटेंस तो कंप्लीट। चेयरमैन साहब ने स्थिति स्पष्ट कर दी 267। The Rajya Sabha on Friday took up discussion over a private member bill, namely the Right to Health Bill 2021. It aims to provide for health as a fundamental right to all citizens. RJD member Professor Manoj Jha moved the legislation. Speaking on it, he highlighted the importance of the right to health. स्वास्थ्य को हम इस नियतिवादी दृष्टिकोण से निकाल करके एक डुएबल प्रोपोजिशन में तब्दील करें, और उसके लिए आवश्यक है कि आंकड़े से डरे नहीं, आंकड़ों को कन्फ्रंट करें, और कन्फ्रंट करने के पश्चात एक ऐसी नीति विकसित करें जिस नीति के तहत आगे कभी कोई महामारी आए सर, तो हम उस महामारी के समक्ष बेबस न हो जाएं। Rajni Patil of Congress drew the attention of the House to the poor conditions of government hospitals. Amar Patnaik of BJD said out-of-pocket expenditure on health is a matter of concern. Dr. K. Keshav Rao of TRS said health and education are the prime concern of the people of the country. हम WHO के उस आंकड़े को पार कर गए जिसमें कहा था एक डॉक्टर 1000 पर होना चाहिए, 1000 पॉपुलेशन पर होना चाहिए। 1.33 डॉक्टर्स 1000 पॉपुलेशन पर हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं हमारी सरकार 2025 आते आते हिंदुस्तान में उस आंकड़े पर पहुंचेगी, 3 डॉक्टर 1000 लोगों पर होगा। जो अमेरिका का आंकड़ा उसे हम पार करेंगे। जो अपनी डिलीवरी के लिए बार बार विनती कर रही थी सफदरजंग हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को बोल रही थी कि मुझे अंदर ले लो, मेरी शायद मुझे डिलीवरी हो सकती है। डॉक्टर्स ने अंदर नहीं लिया, और जब उसको अंदर नहीं लिया तो उसको बोला गया कि आप सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी का मशीन बंद था।
पूरे रात भर वो रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर्स को, उसको अंदर नहीं ले आएगा, रास्ते पे उसको डिलीवर करना पड़ा। उसकी लड़की 7:30 बजे डिलीवर हो गई। आज आपने देखा होगा सभी न्यूज़, सभी पेपर्स में वो न्यूज़ आई थी। ये प्रैक्टिकल न्यूज़ मैं बता रही हूँ, मैं कुछ भी उसमें बढ़ावा नहीं कर रही हूँ, कुछ भी क्रिटिसाइज करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं, लेकिन वी हैव टू बी एम्पैथेटिक। हमें एम्पैथी तो कम से कम बताना चाहिए। ये सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। The most important fact is, even till now, the out-of-pocket expenses for a household in India going towards health expenditure is about 54%, very, very high. And therefore, there is a need for universal health coverage and health for all. Ours is such a big, great country. We need not only look when we talk about the right to health and health facilities, universal health care, kabhi aap baat kare hain ki he has just gone to international conference and even WHO says, this can be to anyone. It need not be citizen of India. As long as he is living in India, he should be entitled to the health care. That should be clear. So section 2 is something which I have an objection to. Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh Narayan Singh conducted the question hour amid protests by opposition parties. Minister of State for Agriculture and Farmer Welfare Kailash Chaudhary, Minister of State for Commerce and Industry Anupriya Patel, among others, answered the questions pertaining to their ministries. कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट हमने क्रॉस किया है। और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस निर्यात में उत्तराखंड फार्मा ऑटोमोबाइल इसका हब है, तो फार्मा एग्रीकल्चर ऑटोमोबाइल का उस निर्यात में क्या योगदान है और सरकार की नीति इसको बढ़ाने की क्या है? जहां तक उत्तराखंड की बात माननीय सदस्य ने की है, ये एक ऐसा राज्य है जहां लगभग 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर फार्मास्यूटिकल्स या इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की इन्होंने बात की, प्रोडक्ट्स की बात की, वो काफ़ी तादाद में उसका प्रोडक्शन होता है। इसके लिए हमारी सरकार ने एक नई पहल की है जिसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। Kapil Sibal, an independent member of Rajya Sabha from Uttar Pradesh, took oath of office again on Friday. His earlier pledge was found to be not in order. I, Kapil Sibal, having been elected a member of the Council of States, do solemnly affirm that I will bear truth, faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. That's all we have in today's bulletin. For daily updates of the Parliament news, keep watching Sansad TV. Good night.